Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurve Namaha. So, a very happy Guru Purnima to all the dignitaries present over here. Respected Sir Principal, Mr. Alok Sharma Sir, Chief Guest, Mrs. Rohini Jagdalia Ma'am, Pre-Primary Headmistress, Mrs. Rashmi Kulkarni Ma'am, Supervisor, Mrs. Jaswinder Kaur Kamath Ma'am, teachers, and all my dear friends. Today, we also have a special guest with us who is none other than our most loved Girish sir. Today, 23rd of July is celebrated as Guru Purnima, which is also called as Vyas Purnima, as it is celebrated in the memory of the great ancient sage Vyas. He compiled the four Vedas. He also wrote 18 Purans, the Mahabharata and the Srimad Bhagavad. Each and every year, this occasion is celebrated on full moon day in the month of Ashad according to Hindu calendar. This festival is traditionally observed by Hindus, Buddhists, and Jains to revere their chosen spiritual teachers and express their gratitude towards them. So, let's start our celebration by remembering the Almighty God. Now, I request all of you to join your hands and close your eyes for the prayer. I also request Shravani Patse of Standard 9 to say the prayer. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने शांति वाहक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने शांति वाहक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए Thank you, Shravani. Dear friends, Guru Purnima was revived by Mahatma Gandhi to pay tribute to his spiritual guru Srimad Rajchandra. So, to know more about the significance of Guru Purnima, I request Sachi of Standard 8. Buddhists, Hindus, and Jains every year on the full moon day of the Shaka Samavat in the Hindu calendar. This festival is for the goodness of spiritual gurus and teachers as thousands of devotees worship and thank their gurus for enlightenment. Guru Purnima is also known as Vyasa Purnima, marks the birthday of Ved Vyasa. Many people donate food and clothes on this auspicious day. People offer food to Brahmins and feed the needy and poor people as well. This is done in order to seek the blessings of the departed souls of Gurus, bless them with a healthy, wealthy, and prosper life. It is really a relief to know that you have someone to always seek advice. A very happy Guru Purnima to all my respected teachers. Thank you. Thank you, Sachi. Dear friends, do you know the word Guru is derived from two words, Gu and Ru. The Sanskrit root Gu means darkness or ignorance, and Ru denotes the remover of that darkness. Therefore, a Guru is one who removes the darkness of our ignorance. So, now I request Sanika of class 10 for the speech of devotion towards Guru. Good afternoon, respected principal sir, teachers, and my dear friend.
Myself, Sanika Dheeraj Kohli of Standard 10th B. I am honored to represent a speech on Guru Purnima, also known as Vyas Purnima. As teachers are believed to be one of the incarnations of Guru, I would like to begin my speech by heartily welcoming and respecting all the teachers and principals present here. Paint their minds and guide their thoughts, share their achievement and advise their faults. For the dawn of each poet, each philosopher and king begins with a guru and wisdom they bring. Guru Purnima is celebrated to honor our teachers who remove all the darkness from our mind. All the holy books of Hinduism dictate the importance of Guru and the extraordinary bond between an Guru and his Shishya. An age-old Sanskrit phrase, Mataha, Pitaha, Guru, Dvyam, says that the first place is reserved for the mother, second for the father, third for the Guru, and fourth for the God. Thus, teachers have been given a higher place than God in Hindu tradition. This festival is deeply rooted in our ancient education system of Guru Shishya tradition, that is, to be scarred. The teaching and life of holy enlightened masters are again recalled. Students are motivated to follow this wisdom and knowledge of spiritual Guru. In the present era, where moral values and the feeling of mutual respect are declining, it has become very essential to understand the importance of this festival. So let us all celebrate Guru Purnima by paying deep gratitude and devotion toward all our gurus for their guidance. On this auspicious day, we should all introspect our life and pay our all gratitude toward all those people who have played the role of gurus in our life. I will end my speech by again conveying my gratitude and respect to all the gurus present here and wishing that their grace remain on each one of us and illuminate our life. Thank you. Thank you, Sanika. Dear friends, with the auspicious day of Guru Purnima, today we also have Lokmanya Tilak Jayanti. It is celebrated as the birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak, who was a great leader of Indian independence movement against the British rule. So, to know more about Lokmanya Tilak Jayanti, I call upon Ishwar. Today, being our greatest leader, Lokmanya Tilak Ji's Jayanti, I would like to tell you about him. Lokmanya Tilak was a great freedom fighter of the Indian freedom struggle. He was amongst first leader who demanded self-rule for India. He gave the slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it. Lokmanya Tilak was born on 23 July 1856 in Chikli village of Ratnagiri. His real name was Keshav. His father's name was Gangadhar Tilak, who was a school teacher. His mother's name was Parvati Bai. Lokmanya Tilak was an intelligent student from his childhood. In year 1877, he obtained his Bachelor of Arts degree from Deccan College of Pune. Tilak and Agrakar started two newspapers, Maratha and Kesari. Tilak promoted nationalism through this newspaper. He started public celebration of Ganeshotsav and Shiv Jayanti so that people come together. He was given the title of Lokmanya Tilak by his father Gangadhar Tilak. जनक म्हणून ओळखले जाणारे लोकमान्य टिळक हे त्यांच्या क्रांतिकारी घोषणांमुळे प्रसिद्ध होते. लोकमान्यांची स्वातंत्र्य सेनानी ही बाजू सर्वांना ज्ञात आहे. मात्र त्याचबरोबर ते लेखक, विचारवंत व इतिहास, खगोलशास्त्र, गणिताचे अभ्यासक होते. त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकांमधून आजही त्यांचे विचार अमर आहेत. तसेच आजच्या पौर्णिमेला विशेष महत्व आहे. आषाढ शुद्ध पौर्णिमेला गुरुपौर्णिमा व व्यास पौर्णिमा असे म्हणून गौरवले जाते. आषाढ महिन्यातील शुद्ध पौर्णिमेला तथागत गौतम बुद्धांनी आपल्या सर्वप्रथम उपदेश करून जीवन मार्ग जन्माला घातला. गुरु ईश्वराचे दुसरे रूप आहे. ज्यांच्यामुळे आपले व्यक्तिमत्व घडले त्यांच्या प्रती आदर व्यक्त केला पाहिजे. आपल्या जीवनात गुरूंचे नानाविध रूप पाहायला मिळतात. मूल गर्भात असल्यापासून आई त्याच्यावर उत्तम संस्कार करते.
शकते. म्हणून आई ही आपला पहिला गुरु असते. पुढे जगण्यासाठी नेहमी चांगले संस्कार देतात ते आपले गुरु. आज जरी शिक्षण पद्धती बदललेली असली तरी गुरु शिष्याचे नाते बदललेले नाही. निष्ठा आणि कर्तव्य. गुरु शिष्य म्हणजे श्रद्धा आणि भक्ती. गुरु शिष्य म्हणजे आदर्श आणि संस्कार. गुरु शिष्य म्हणजे विश्वास आणि आत्मविश्वास. पुन्हा एकदा माझ्या गुरूंना स्मरून उपस्थित सर्वांना गुरुपौर्णिमेच्या लक्ष शुभेच्छा. धन्यवाद. Thank you, ma'am, for your guiding words. Now, I request Devkar sir to show the video presentation of the announcement of the prize winners for the activities conducted. रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ 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 सांस में चढ़ा ले, हिचकियों में क्या है मरना, पूरा मर ले। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है सारा। Thank you, sir. Today is a day to be grateful, to thank, be humble, and smile towards our gurus. So now I request Devkar sir to show the video presentation of primary students expressing their love and respect towards gurus, teachers, and parents. They have prepared greeting cards for their gurus, teachers, and parents. Some of them have also done Padya Puja of their parents. गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् गुरु ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः Good morning, respected principal sir, teachers, and all my dear friends. I am Sheikh Faisal from class 2nd A. Guru and God both appear before me. To whom should I prostrate? I bow before Guru, who introduced God to me. Happy Guru Purnima to our Honorable Director, Dr. Vilas Ravji Kadam sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. All here, my friends. My name is Aradhya. I am special occasion of Guru Purnima. I would like to say that Guru Purnima is a special celebrated by everyone. It is celebrated on full moon day, and today is a day to be grateful to. Thanks, be humble and smile. Thank you for making my life worthwhile. There will be no darkness in my life. When there is the ray of light of your blessing and teaching. Wish you all my teachers and respected principal sir and ma'am. Very happy Guru Purnima. Thank you. Good morning, teachers and friends. My name is Sriram Kare. On the occasion of Guru Purnima, I made a greeting card for all my teachers. Guru is an aspiration. Guru is an inspiration. Guru is everything. May Guru's blessing always shower on me. Happy Guru Purnima to respected pre-primary headmistress ma'am. Thank you. Good morning everyone. My name is Yashraj Kadam. I study in 2nd standard. My teachers are my life. I am really thankful to them for beginning my life. I have been blessed to have the best of them. Happy Guru Purnima to our beloved supervisor ma'am. Thank you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Guru Purnima is dedicated to our Gurus, that is our teachers. Guru shows us in the right path in the journey of our life. We should all respect our Gurus. Vandan to all my teachers and happy Guru Purnima to all. Thank you. Good morning. I am Kashyap Vijay Bolana of class 2nd. आपसे सीख
When one finds the true Guru, one conquers half the world. So now I request Ved Patak sir to please introduce the chief guest of our today's program and our special guest also. थँक यू हेमंत. गुड आफ्टरनून. आदरणीय प्रधानाध्यापक श्री आलोक शर्मा सर, मुख्याध्यापिका रश्मि कुलकर्णी मैडम, पर्यवेक्षिका जसविंदर कौर मैडम तथा सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे छात्रों, प्रथमतः आप सबको गुरु पूर्णिमा के हार्दिक शुभकामनाएं. आज गुरु को वंदन करने का और आशीर्वाद पाने का दिन. ऐसे समय में आज के इस कार्यक्रम के अतिथि है प्रधान अध्यापिका सौ रोहिणी जगदाळे मैडम, जिन्होंने इस भारतीय विद्यापीठ प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल नवी मुंबई में 30 वर्षों से ज्यादा सेवा दी है. इन्होंने अनेक छात्रों का भविष्य अपने कार्यों से निर्माण किया है. ऐसे रोहिणी मैडम जगदाळे मैडम का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं. से अनुरोध करता हूं कि आप अपने विचार प्रकट करें. गिरीश सर. सभी को मेरा सादर प्रणाम. प्रधानाचार्य श्री आलोक शर्मा जी, जसविंदर मैडम तथा रोहिणी जगदाळे मैडम और मेरे सभी अध्यापक गण, मेरे मित्र और प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबको मेरा दिल से प्रणाम. आज इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं सभी का दिल से आभारी हूँ. आज गुरु पूर्णिमा है. मेरे जीवन में गुरु का, माता पिता का, सभी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे आपके है. हम सबके जीवन में मित्र, गुरु, माता, बंधु सभी समय समय पर हमें राह दिखाते हैं. समाज में ऐसे अनेक घटक है जो हमें सिखाते हैं. इसी कारण वे सभी हमारे मित्र है, गुरु है, सखा भी है. मैं इस अवसर पर आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद को हमेशा याद रखने की कामना ईश्वर से करता हूँ. कुछ बातें छात्रों से करना चाहूंगा. आप सभी को पता है, कबीर की संतवाणी आपने 9th और 10th में भी पढ़ी है. गुरु का महत्व बताते हुए कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजई, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य, गुरु बिन मिटे न दोष. अर्थात गुरु के बगैर ज्ञान, मोक्ष, सत्य और दोष, ये चीजें हमें नहीं मिलेगी. दूसरे स्थान पर कभी करते हैं, गुरुजी ऐसा पेड़ है, लंबा पेड़ खजूर, जो चढ़े चाखे प्रेम रस वरना चकना चूर. अर्थात जो गुरु के सानिध्य में जितना जाने की कोशिश करेगा. गुरु के बारे में कबीरदास कह रहे थे कि गुरुजी ऐसा पेड़ है, लंबा पेड़ खजूर, जो चढ़े चाखे प्रेम रस वरना चकना चूर. अर्थात हम सभी को गुरु के संपर्क में रहना चाहिए. इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों को गुरु के संपर्क में रहना चाहिए. देखिए, माता पिता से आनंद होता है, वैसे ही गुरु के संपर्क में जाने से हमें भी आनंद होता है. गुरु हमें मन में विश्वास, उत्साह, जागृति, सचेतना सभी चीजें गुरु हमें देते हैं. ऐसे हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर तथा गाइड को मन में जीवन भर संभाल कर रखना चाहिए. देखिए, हमारे गुरु हमारे फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, एक अच्छे फिलोसोफर होते हैं तथा आपको गाइड भी करते हैं, दिशा दिखाते हैं. एक स्थान पर मराठी संत है श्री स्वामी समर्थ. उन्होंने कहा है, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठी आहे. अर्थात गुरु भी वैसे ही है. इस आधुनिक युग में क्षण क्षण पल पल आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं. अंत में जाते जाते आप सभी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा,
यदि हम मान ले कि गुरु आपसे हर संभव सकारात्मक कार्य करवाना चाहते हैं ताकि आप पृथ्वी पर आने के सारे सबक और अंतिम सत्य पा सके, इसलिए स्वीकार भाव के साथ गुरु आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। देखिए, सभी ने गुरुजनों का सम्मान किया है, आप भी करते ही हो, लेकिन गुरु का महत्व आज भी हमारे जीवन में कम नहीं होता है। जैसे कि सांदीपनी ऋषि है, श्री कृष्ण है, तानाजी है, दादाजी कोंडदेव है, अनेक गुरु परंपराएं हम आपको बता सकते हैं, लेकिन गुरु परंपराओं को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे सभी गुरुओं का सम्मान करते चाहिए। इतना कह के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम। Thank you, sir, for your guiding words. Now, I request Devkar sir to show the teacher's felicitation video presentation. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा। कृपा सिंधु अवधूता कृपा सिंधु अवधूता तुझ्या चरणी देवा झुकतो माथा। नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा। सातत्याने भक्तासाठी परब्रह्म सद्गुरु सातत्याने भक्तासाठी परब्रह्म सद्गुरु तू समय संकटी साक्षात कल्पतरु साक्षात कल्पतरु। गुरु सर्वदाता गुरु सर्वदाता नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा। साता जन्माची पुण्याई गुरु हीच आहे साता जन्माची पुण्याई गुरु हीच आहे। गुरु माझे सर्व काही नित्य हेची सत्य आहे नित्य हेची सत्य आहे। गुरु माझी माता गुरु माझी माता नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा। गुरु सर्व जाणता गुरु माझा सखा गुरु सर्व जाणता गुरु माझा सखा। भक्तीसाठी सद्भक्ता गुरु पाठी राखा गुरु पाठी राखा। गुरु माझी माता गुरु माझा पिता नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा। कृपा सिंधु अवधूता कृपा सिंधु अवधूता तुझ्या चरणी देवा झुकतो माथा। नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा नमो गुरुदेवा।
गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु माझा ईश्वर गौरा हे परमेश्वर। Thank you, sir, for such a wonderful video presentation. Guru Purnima is considered as an auspicious day by the people, especially to the farmers, because at this time there is a heavy shower which helps crops to grow. So now I request our today's chief guest, Mrs. Rohini Jagdale ma'am, to please enlighten us with her guiding words. Is the day that holds special importance to our life. It is celebrated on the full moon day during the Ashada month. Day is celebrated to mark the birth anniversary of Ved Vyasa, the author and character in the epic Mahabharata, Vedas and Puranas. It is observed to pay respect to the Gurus who have guided us and imparted us with their knowledge and wisdom. If you respect your Guru, you can conquer half the world. Follow the path shown by your Guru. You will always shine like a star in your life. Thank you, ma'am, for your guiding words. ज्ञान का पाठ है आपसे सीखा, चमका है आप ही से भाग्य का लेखा। जीवन जीने की कला है आपने सिखाई, आत्मविश्वास की सीढ़ी है आप ही से पाई। ज्ञान के गुलदस्ते की महक आप ही से पाई, हर तरफ आपकी शिक्षा है छाई। जीवन के हर मोड़ पर भी आपकी शिक्षा आएगी। Of Guru Purnima, I bow down to my Guru for imparting the immense wealth of knowledge and wisdom. Happy Guru Purnima to all. It gives me a great privilege to propose a vote of thanks on this memorable occasion. I thank our management and respected Principal Sir, Mr. Alok Sharma Sir, for his vision and encouragement. I extend my sincere thanks to our chief guest, respected Mrs. Rohini Jagdale Madam, and our special guest, Mr. Girish Manjure Sir. I thank pre-primary headmistress, respected Rashmi Kulkarni Madam, for her unstrided support. I also thank our respected supervisor Madam, Mrs. Jasminder Kaur Kamath Ma'am, for her unconditional guidance. I owe a special gratitude to all the teachers and the organization team who have worked hard to make this program a success. I thank all the students who have participated with enthusiasm and made this a very engaging and captivating event. Thank you, everyone.